My mantra is love is not an emotion, it's a very essence. I'm looking for entrepreneurs who love what they do. May your choices reflect your hopes, not your fears. Entrepreneurship is one of the strongest economic forces in the world, जो कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी को मुकम्मल तौर पे तब्दील कर सकता है. My limitation should be my ability and never my ambition. यार it's been a while since we've met, huh? Exactly, I've been thinking the same कि कोई गपशप सेशन होना चाहिए, कोई यादें ताज़ी करें. यार ये तो सब होता रहेगा. तुम लोग बताओ आजकल क्या कर रहे हो? यार it's the same, the 9 to 5 job and it's gotten really exhausting for me. यार शुक्र करो तुम्हारे पास एटलीस्ट जॉब तो है. हाँ, but 9 hours job is like made my life hell. लेकिन यार मैं बैचलर्स के बाद से अनएम्प्लॉयड हूँ. यार just don't lose hope, okay? Everything's gonna work out for you. And तुम्हारा क्या सीन है? यार you know me, I'm just working for myself. और वो क्या है? So I have my own startup. मैंने एक digital production house start किया. I do what I love and I make my own money. ये स्टार्टअप की चीज़ है. An idea. नहीं समझ आया? चलो मैं बताता हूँ. स्टार्टअप जो है नॉर्मली एक कलेक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हैं, जहाँ पे 2-3 लोग इकट्ठे होते हैं तो वो एक कंपनी या एक आइडिया के ऊपर काम करते हैं, तो वो बेसिकली एक स्टार्टअप कहलाता है. इसकी एग्जांपल ये है, अगर आप एंटरप्रेन्योर्स के नाम लें तो आपको जैक मा, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, ये एंटरप्रेन्योर्स हैं. तो पाकिस्तान में भी मुझे उम्मीद है कि आजकल की जो छोटी छोटी कंपनी जो हम स्टार्टअप कर रहे हैं इन एंटरप्रेन्योर्स के साथ, वो इंशाल्लाह कल जाके बड़ी कंपनीज बनेंगी. समझ आई? और अब तो इंक्यूबेटर्स ने भी स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है. और अब ये इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं? चलो अब मैं ये भी बताता हूँ. The incubation centers work basically to facilitate the startups. So the incubation center provides free space, including facilities for the differently enabled people, including facilities for young entrepreneurs. उस प्रोडक्ट को स्केल कैसे करना है, उस प्रोडक्ट को मार्केट तक कैसे लेके जाना है, उसका बिजनेस मॉडल क्या होना चाहिए, वो स्टार्टअप कैसे पैसे बनाएगा, स्केल कैसे करना है और ग्रो कैसे करना है, और क्या चाहिए स्टार्टअप को. उसको चाहिए कि जी मुझे इन्वेस्टर्स के साथ मुलाकात हो जाए, मेरी कोई पोटेंशियल जो और लोग हैं जिनके पास को पैसे हैं वो इन्वेस्ट कर सकें आपके स्टार्टअप के अंदर. जैसे कंप्लीट वैल्यू चेन पे काम करता है. इंक्यूबेशन से पहले एक हैचरी फेज़ होती है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान KPIT बोर्ड का प्रोग्राम है दुशल. वहाँ पे हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं. उससे अगला फेज़ होता है इंक्यूबेशन का, जहाँ पे हम मिनिस्ट्री ऑफ IT गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर का प्रोग्राम 3 साल से बहुत कामयाबी से रन कर रहे हैं. 160+ स्टार्टअप्स वहाँ पे या तो ग्रेजुएट कर चुके हैं या प्रोसेस ऑफ ग्रेजुएशन में. उससे अगला फेज़ एक्सेलेरेटर का होता है, जहाँ पे हम स्टार्टअप्स को जो सक्सेसफुल हो जाती हैं उनको नेक्स्ट फेज़ पे लेके जाते हैं. वहाँ पे जैज़ एक्सेलेरेट का प्रोग्राम है, जहाँ पे हम उनको फास्ट ट्रैक ग्रोथ और स्केल के अंदर हेल्प करते हैं. The Centrum Media, in collaboration with Frederick Naumann Foundation, brings you Pakistan's first ever digital reality show, The Startup Gen, a platform that looks for talented entrepreneurs and showcases their disruptive startup ideas to the world. The most innovative startup will represent Pakistan at leading Mobile World Congress in Barcelona. Startup Gen को सीजन 1 के लिए पूरे पाकिस्तान से बेशुमार एप्लीकेशंस मौसूल हुई. It's time for the selection panel now to choose 25 startups from the total applications. ये selection process आसान नहीं था, but after many back and forth arguments between the panelists, they have selected 24 teams. Strongly, I was looking at the team, and then I was looking at the physical product that's ready. कि ready है क्या चीज़ बातें और क्या चीज़ प्रैक्टिकल है. पैसे कमा सकते हैं, रेवेन्यू बन जाएगा कुछ अरसे में, and it's backed up by a good team. It was a go for me. टीम की स्ट्रेंथ इम्पॉर्टेंट है, and also the kind of problem they're solving or the impact that solution is bringing. It was difficult to select out of the entire pool that we got, इसलिए क्योंकि काफ़ी mature startups थे, काफ़ी especially from cities like Karachi, Lahore and Islamabad. The top startups in Pakistan had applied for this reality show. So just deciding कि यार इसमें कौन से मैंने लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं, किनको डिसाइड करना है, it was very difficult. पैनलिस्ट के बीच बहुत बार डिवाइड पैदा होता रहा, क्योंकि सारे स्टार्टअप एक से बढ़कर एक थे. Khawateen Rozgar Services. 9,120 females registered. Placements 265 placements available. Facebook Live. Facebook Live does not matter.
We offer security, quality, safety. How do we ensure safety? Visit to the organization, evaluation of job environment. So I personally feel like Sania और Sumaira का थोड़ा सा bias आ रहा है startup की तरफ से because they're women. I think I just put them in yellow, but I don't mind giving them a green by the way. So obviously मेरी बड़ी natural preference थी कि अगर किसी टीम के अंदर genuine female founders होती. Really? I don't think I'm going to give them a green. यार मैं एक काम करता हूँ ना मेरे ख्याल में जो ग्रीन हो गए हैं let's write them down. Yeah, let's write them down. So the first is Balushi. Spelling सही तरह बता देना यार ना spelling complete. और इस तरह हमारी शॉर्ट लिस्टिंग पैनल ने एक एक करके 24 टीम्स को सिलेक्ट कर लिया है. नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 स्टार्टअप्स. वन हैज टू गो होम. मुकाबला स्ट्रॉन्ग है. अब देखना ये है कि पैनलिस्ट किसको चूज करेंगे. So we have 2 final startups for the final slot of the startup gen, Social Boo and Kumak. And I have to tell you guys, I am very much inclined to go towards Social Boo. I think I am in favor of Kumak. It's a very impactful, meaningful work. And plus, he's already built his technology. So the kind of exposure that the Startup Gen platform can give to him in terms of customers and in terms of investment. No, I disagree on that. I think both of them are really good. There's just comparison ही कोई नहीं ना एक यहाँ है. नहीं ये भी नहीं है ना दोनों यहाँ हैं. I think दोनों यहाँ हैं. ठीक है ना तुम्हारी 1.5 इंच की मस्जिद तुमने बना ली है दोनों को पहुँचाना है दोनों नहीं पहुँच सकते. We know that. I believe यार वो दोनों जो स्टार्टअप्स हैं हमारे वो बहुत ही बेहतर हैं. ना एक दूसरे से अच्छा है ना दूसरे से अच्छा है. They're both better in their own domains. I'm very much inclined towards Kumak Technologies क्योंकि वो एक ऐसा स्टार्टअप है जिसकी ज़रूरत है हमें. They're building a drone that can provide medicines to areas जहाँ पे roads नहीं हैं. और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों इतने ज़्यादा कुमक को प्रेफरेंस दे रहे हैं. आज जो है वो दोनों तरफ जो है ज़रा स्ट्रीमलाइन हो रहा है. वो कह रहे हैं इसकी तरफ भी देना दोनों को जाना चाहिए. एंड देन सानिया इज adamant in getting कुमक in there. ठीक है. But the thing is Social Boo is just a lot better than them in terms of the visibility, in terms of the platform, in terms of the technical platform, and they need the exposure for this platform, which is why I'm not going to give up on them and I'm going to make sure that they become part of this show. Has it been operating? I don't think so. And we don't know how long it's going to take them. We can give them a lot of exposure, but we don't know. So let's go with Social Boo. I think this is productivity startup, and we need those just like we have one of our startups in Tegri. I know you're inside. You have this gut feeling to go with Social Boo. Shall we? Ahad का तो वैसी wild card है इसको तो खिड़की से बाहर फेंक देना. What do you say? I say both of them. दोनों के साथ है ना. 1 marks दोनों को दे दिया. I just need you to like just. Oh, she's ready. She's almost ready. Sania in है. Sania. Let's go with Social Boo. Let's write final startup for the Startup Gen. And the last selected candidate for the Startup Gen is Social Boo, जो अब 25 startups का हिस्सा बन गए हैं. So if I field के बारे में अगर मैं देखूं कि कौन सी इंडस्ट्री से थे या कौन से सेक्टर से थे तो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप जो नज़र आए हैं हमें वो हैं एजुकेशनल सर्विसेज, IT सर्विसेज एंड टेक इनोवेटिव स्टार्टअप्स. Competition was tough, but we finally were able to select the final 25. The final 25 selected startups for Startup Gen are Karachi से Base H, Bionics, Wash Easy, Ustad Ustani, Go Spark, The Social Circle, Smart Blind Walking Stick. लाहौर से सेलेक्ट हुए हैं माजरत, Fortisto, Social Boo, Ingram ID, AdWheels, Car Helpline. इस्लामाबाद से SMT, TexT, Foray, TechFlow, BizBride, Avekao और पेशावर से Galuna, Unidesk, HelioEdge, SolarSeal, Balushe, Khawateen Rozgar Services. Startup Gen is now going across Pakistan to Karachi, Lahore, Islamabad and Peshawar, जहां 25 में से 8 स्टार्टअप सेलेक्ट होंगे और हमें इस्लामाबाद में ज्वाइन करेंगे फॉर द फाइनल कंपटीशन. Who will win Startup Gen Season 1? Stay tuned. क्यों डिटेक्ट कर रहा है? क्या डिटेक्ट कर रहा है? ये ऑब्स्टिकल डिटेक्ट कर रहा है. हमने जो कहाँ है ऑब्स्टिकल? इंजीनियर से एंटरप्रेन्योर बनने का सफ़र जो होता है उसमें सबसे पहली चीज़ आप रेवेन्यू मॉडल सोचते हैं अपना. अच्छा देखें, जाने से पहले ना मुझे वो डाउनलोड करवा दीजिएगा अपनी ऐप. ऐप है, वेबसाइट है,
क्या है। सुनिए बिल्कुल वैसे बैक स्ट्रीट बॉयज़ की याद आ गई। This is made with hybrid technology. इसकी जो fingers हैं, these are 3D printed. वो आयरन मैन की आर्म लेके आया। That is such a cool thing मेरी एज के लिए भी।